Hi, my name is Sweet Samanto. Welcome to Learning Table YouTube platform. In this video, we will discuss about engineering mechanics part 1. क्योंकि मैंने जब फर्स्ट वीडियो डाला था उसके बारे में मैं कुछ बोला था कि इसके बारे में कि मैंने पहले फर्स्ट वीडियो डालूंगा क्या कि सम क्वेश्चंस एंड आंसर्स दैट इंटरव्यूअर आस्क्ड। सो उसका डिस्कशन हमने कर लिया। उसके बाद मैंने बोला था कि एक टेक्निकल वीडियो होगा, टेक्निकल वीडियो पूरा का पूरा सीजन चलेगा टेक्निकल वीडियो का। तो सेकेंड वीडियो टेक्निकल वीडियो लेके आया हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टॉपिक होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पार्ट 1 होगा, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इसको जितना होगा एक वीडियो में उतना हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद रिमेनिंग पार्ट जो रहेगा ना, रिमेनिंग पार्ट जो रहेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we discuss about engineering mechanics. So first of all we have to know that what is engineering mechanics. So what is the definition of engineering mechanics? Here is the definition of engineering mechanics, that it says that engineering mechanics is that branch of engineering science, engineering mechanics, that branch of engineering science which deals with the principles of mechanics along with their application. So यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस, इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस, इट इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस व्हिच डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स अलोंग विथ देयर एप्लीकेशंस। इंजीनियर प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स का जो एप्लीकेशन होगा उसका एप्लीकेशन का साथ उसका मैकेनिक्स का प्रिंसिपल उसको जो डील होता है इन इंजीनियरिंग साइंस का, उसको हम बोलते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस व्हिच डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स अलोंग विद देयर एप्लीकेशंस। ओके, नेक्स्ट होगा द क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. So we have to know that what are the types of engineering mechanics. So classification of engineering mechanics is also classified into two types. First one is statics and second one is dynamics. So statics का definition क्या होगा? Statics का definition होगा, it is that branch of engineering mechanics, it is that branch of engineering mechanics which deals with the forces and their effects, which deals with the forces and their effects while acting upon a bodies at rest. So first of all statics का definition क्या हो गया? It is that branch of engineering mechanics which deals with the forces and their effects. Forces, you have to remind this, forces and their effects while acting upon the bodies at rest. जब बॉडी रेस्ट पे होगा तब बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स होगा उसको ही हम कहते हैं स्टैटिक्स। उसका ही हम कहते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का स्टैटिक्स. सो स्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स व्हाइल एक्टिंग अपॉन अ बॉडीज एट रेस्ट. सो सेकंड वन इज द डायनामिक्स. तो डायनामिक्स का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स व्हिच deals with the forces and their effects while acting upon the bodies in motion. So here is the difference between statics and dynamics. While acting upon a bodies at rest in statics and while acting upon a bodies in motion in dynamics. Dynamics का क्या definition है? It is that branch of engineering mechanics which deals with the forces and their effects while acting upon a bodies in motion. Then dynamics also further classified into two types. Okay, तो dynamics उसके बाद भी दो types होता है. क्या क्या? First one is the kinetics and second one is the kinematics. So पहले वाला क्या है? Kinetics. What is the definition of kinetics? Kinetics का definition क्या होगा? It is that branch of dynamics. It is
यहाँ देखो, यहाँ पर किसका क्लासिफिकेशन हो रहा था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, इसलिए हम बोले थे कि इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये क्या हो गया, ये डायनेमिक्स का क्लासिफिकेशन हो गया। सो इसके बारे में हम जब डेफिनेशन बोलेंगे इसके बाद क्या होगा, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ डायनामिक्स। ओके, सो इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ डायनामिक्स which deals with the bodies in motion, which deals with the bodies in motion due to the application of forces। सो डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि it is that branch of dynamics which deals with the bodies in motion due to the application of forces। So second one is the kinematics। Kinematics का क्या definition? What is the definition of kinematics? It is that branch of dynamics, it is that branch of dynamics which deals with the bodies in motion without taking into account the forces, without taking into account the forces which are responsible in motion। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मोशन के लिए जो फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम काउंट नहीं करते कहाँ पर, काइनेमेटिक्स के साथ। सो इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ डायनामिक्स which deals with the bodies in motion without taking into accounts the forces which are responsible in motion। so यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है कि यहाँ पर क्या रिलेटेड एक कॉमन चीज़ होता है, एक कॉमन रिलेटेड थिंग्स हो रहा है यहाँ पर। देखो, फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट, दिस आर द कॉमन थिंग्स where we can relate in every definition, that is the forces and their effects। okay, so here the forces and their effects, forces and their effects in dynamics, in bodies in motion, deals with the taking into account of the forces and which are responsible in motion। Here is the due to the application of forces। so forces and their effects is also related in every definition। so first of all we have to define, we have to know what is force। so here is the definition of force। यहाँ पर force का definition दिया है। force का definition क्या होगा, what is the definition of force? it is an agent which produced or tends to produce। क्या बोल रहा है कि it is an agent which produce or tends to produce, destroy or tends to destroy। destroy के पास जा रहा है कि destroy होने की कगार में है, ठीक है। so it is an agent which produce or tends to produce, destroy or tends to destroy the motion of a body। okay, that is the definition of force। इसके बाद हमको क्या जानना है, सेकेंड नेक्स्ट इज, इसके बाद क्या जानना है कि फोर्स व्हाइल एक्टिंग ऑन ए बॉडी में। सो एक फोर्स बॉडी के ऊपर एक्टिंग हो रहा है, ठीक है, एक बॉडी के ऊपर फोर्स एक्टिंग हो रहा है, तो उसके बाद बॉडी में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या चीज़ होगा, उसके इफेक्ट क्या होगा, फोर्स का इफेक्ट क्या होगा बॉडी के ऊपर। वो 4 तरह का इफेक्ट हो सकता है। क्या क्या हो सकता है देखो, ए फोर्स while acting on a body may, first one is change the motion of a body का मोशन चेंज हो सकता है। may change the body motion of a body while जब हम एक बॉडी के ऊपर फोर्स एक्टिंग करेंगे, उसका जो मोशन पहले वाला था उसका मोशन चेंज हो सकता है, तो पहले वाला का मोशन चेंज हो सकता है। इसलिए मैंने बोला, इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि ए फोर्स while acting on a body may change the motion of a body। second one is restore the motion of a body, retore the motion of a body। okay, retore the motion of a body। third one is balance the forces already acting on a body। फोर्स का बैलेंस होगा जब ऑलरेडी एक्टिंग ऑन ए बॉडी हो रहा है, तो बॉडी पे फोर्स एक्टिंग हो रहा है ऑलरेडी, तो इस फोर्स के वजह से क्या होगा, बैलेंस होगा फोर्स का। सो इसलिए बोला है कि ए फोर्स व्हाइल एक्टिंग ऑन ए बॉडी में बैलेंस द फोर्सेस ऑलरेडी एक्टिंग ऑन ए बॉडी। ओके, जो ऑलरेडी बॉडी के ऊपर एक्टिंग हो रहा है फोर्स, उसके साथ बैलेंस होगा। fourth one is give rise the internal stresses in a body, give rise to the internal stresses in a body, give rise to the internal stresses in a body। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि give rise to the internal stresses in a body। सो एक फोर्स जब अप्लाई होगा इस बॉडी के ऊपर, हम जानते हैं कि सभी जानते हैं कि एक बॉडी के ऊपर फोर्स जब अप्लाई होगा, वहाँ पर उसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस गेन होगा, ठीक है। उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, इंटरनल स्ट्रेस कहते हैं। तो यहाँ पर जब फोर्स एक्टिंग होगा एक बॉडी के ऊपर, क्या में गिव रेस, एक इंटरनल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा इन ए बॉडी।
Okay, that is the fourth point. Okay, so next one is, in order to determine the effect of a force acting on a body, in order to determine, तो यहाँ पर डिटरमाइन करने के लिए, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन करने के लिए द इफेक्ट ऑफ फोर्स, द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, तो जो फोर्स का इफेक्ट होता है ऑन एक्टिंग ऑन ए बॉडी, तो उसका डिटरमाइन करने के लिए वी मस्ट नो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फोर्स। सो एक फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के लिए पहले फोर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको जानना पड़ेगा, क्योंकि हम द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिटरमाइन करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या जानना पड़ेगा, द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। सो हियर इज द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फोर्स। फर्स्ट वन होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मीनिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स? फोर्स का वैल्यू क्या होगा, वही होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सेकेंड वन इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस। द लाइन ऑफ एक्शन, जो फोर्स होगा उसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ क्या होगा, किस तरफ होगा, लाइन ऑफ एक्शन किस तरफ होगा, उसको हमको जानना पड़ेगा। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। थर्ड वन इज द नेचर ऑफ द फोर्सेस। व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स? फोर्स का नेचर क्या होगा, इधर पुल फोर्स होगा, पुश और क्या पुश फोर्स होगा, दोनों में से क्या होगा, उसका जो भी होगा वही क्या हो जाएगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, द नेचर ऑफ द फोर्स, पुल और पुश। फोर्थ वन इज द पॉइंट एट व्हिच द फोर्स इज एक्टिंग। सो फोर्स का जो एक्टिंग पॉइंट होगा, उस एक्टिंग पॉइंट को जानना पड़ेगा, उसका एक्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसको मस्ट बी knows about the point at which the force is acting. So here these are the 4 characteristics that we must know to determine the effect of a force acting on a body. Okay, next one. So here is the force and their effects related to हो गया। तो इसके बाद क्या होगा, हमको डेफिनेशन जानना पड़ेगा, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। सो यहाँ पर क्या होगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स का जो डिटर्मिनेशन होगा उसका क्या होगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स का डिटर्मिनेशन के लिए हमको जानना पड़ेगा व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज ए सिंगल फोर्स, इट इज ए सिंगल फोर्स which produce the same effect as produced by all the given force acting on a body। जो all forces जो बॉडी के ऊपर एक्टिंग होता है उसको छोड़ के उसका जो प्रोड्यूस होता है, जो फोर्स प्रोड्यूस होता है, जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसका सेम इफेक्ट एक फोर्स के लिए जो होगा वो हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। इसलिए हम इसका डेफिनेशन हो रहा है क्या, इट इज ए सिंगल फोर्स व्हिच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट as produced by all the given force acting on a body। एक बॉडी के ऊपर ऑल फोर्सेस जब एक्टिंग होगा, जो इफेक्ट होगा वो सेम इफेक्ट एक सिंगल फोर्स के लिए होगा, तो उस सिंगल फोर्स को क्या करेंगे हम, रिजल्टेंट फोर्स। ओके, सो नेक्स्ट वन, द रिजल्टेंट फोर्स मे बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग 3 लॉज ऑफ फोर्स। सो हमको क्या करना पड़ेगा, इस रिजल्टेंट फोर्स को डिफाइन करना पड़ेगा, उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो उसका वैल्यू निकालने के लिए 3 तरीका होता है, 3 लॉज ऑफ फोर्सेस होता है। सो यहाँ पर इसलिए बोल रहे थे द रिजल्टेंट फोर्स में बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग 3 लॉज ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट लॉ क्या होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स। सेकेंड लॉ इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स, एंड थर्ड लॉ इज द पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्स। इन 3 लॉज के बारे में हम लॉज ऑफ फोर्स के बारे में हम जानेंगे, एक एक करके जानेंगे। पहला वाला क्या है, पहला होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स। सो वी हैव टू नो दैट कि व्हाट इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स। सो here is briefly state that if two forces, what is the parallelogram laws of force, if two forces acting simultaneously, here is the diagram here is the diagram, and here is the definition. So we have to relate this diagram and definition.
if two forces here if two force means p force and q force, ठीक है. If two forces acting simultaneously on a particle, so here is the O point, here is the particle के ऊपर क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली दो फोर्स एक्टिंग हो रहा है. क्या क्या, पी फोर्स, हम यहाँ पर नाम दे दिया, एक का नाम दे दिया पी फोर्स, एक का क्यू फोर्स. तो इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल, बी रिप्रेजेंटेड इन magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram. So here is the two sides of a parallelogram and two forces are magnitude and here is the magnitude of p and q, and here is the direction of the two sides of parallelogram. One is the p force, one is the q force, here and here. These two forces are the two sides of the parallelogram, be represented in magnitude and direction at a particle O. हम नाम दे दिया O पार्टिकल, O पॉइंट पार्टिकल का नाम दे दिया. इसके बाद क्या बोला, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, देन देयर रिजल्टेंट मे बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, Here is the diagonal. If we consider that this is the OA is the P force, and here is the parallelogram, that is also the BC is the P. Also value this portion is the value. This portion is also be the P value, and this portion also be the Q value, because these are the parallel. That is why we must says that then their resultant may be represented in magnitude and direction by the diagonal of a parallelogram. Here is the diagonal of a parallelogram. Here is the diagonal of a, if we imagine that the BC and AQ is the parallel of P and Q value, then there is a parallelogram and there is the diagonal of a parallelogram. Here is the diagonal of a parallelogram represented in the resultant force, magnitude and direction. Here is the represented force, direction is that direction, and magnitude is the R. Okay, value of resultant force is the R, and direction is the diagonal of a parallelogram. Okay, the diagonal of a parallelogram which passes through their points of intersection. Here is the point of intersection C, and here is the passes through the diagonally passes through the resultant forces and intersect the C point. That is the statement, that is the draw, that is the diagram, that is the drawing. So we have to find out the value of resultant force R. So let us consider two force P and Q acting at an angle theta, Here is the P force and Q force acting at an angle theta. Okay, at point O, and the resultant force must be represented in R. Okay, so the value is root over of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. And then if the resultant means R makes an angle alpha, here is the resultant force, and P force makes an angle alpha with the P force. Here is the P force makes an angle with the R, and P force is the alpha. Then tan alpha is equal to Q sin theta by P plus Q cos theta. So here we have then we can find the value of alpha angle. Okay, then we can find the value of alpha angle. It is equal to tan inverse Q sin theta by P plus Q cos theta. Okay, इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो दो वैल्यू है उसका वैल्यू कैसे आया है, यहाँ से हम तो लिख दिया है यहाँ से क्या होता है दोनों को, पर इसको हम डिफाइन करेंगे, इसको कैसे, इसका वैल्यू ये कैसे होता है उसका डिफाइन करेंगे एक के बाद एक. ठीक है.